हेलो नमस्कार। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और विकलनीयता, लेक्चर नंबर 7। चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 5.5 में आगे लास्ट टाइम हमने 8 एग्जाम्पल सोल्व किए थे। दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स y इक्वल टू fx रेज़ टू gx, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बेस एंड पावर बोथ साइड x टर्म्स, derivative of y means find the dy by dx, taking log both side first and then derivative with respect to x. આ આપણે ઘાતાંકીય વિધેય y બરાબર છે તેનું dy by dx શોધવું છે તો પહેલા બંને બાજુ log લેવો પડે કારણ કે આધાર અને ઘાતમાં x વાળા પદ છે। પહેલા log બંને બાજુ લેવાનું એટલે ઘાત ગુણાકારમાં આવી જાય અને પછી વિકલન કરવાનું। જમણી બાજુ વિકલન ગુણાકારના નિયમથી થશે। x વિશે વિકલન કરવાનું। लास्ट एक्सरसाइज 5.5 में हमने दिस टाइप ऑफ एग्जांपल 8 फिनिश किया है। नाउ एग्जांपल नंबर 9। sin x raised to x plus sin x raised to sin x, y equal to x raised to sin x plus sin x raised to cos x plus sin x raised to cos x. Find dy by dx, derivative with respect to x, differentiate with respect to x, x વિશે વિકલન કરવાનું છે। First u equal to x raised to sin x and v equal to sin x raised to cos x. Now y equal to u plus v, therefore implies that dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. u equal to here x raised to sin x. We want find du by dx. આપણે અહીંયા du by dx પહેલા શોધવું છે તો x terms both side exponential form, base and power both side x, ઘાતાંકીય વિધેયમાં આધાર અને ઘાતમાં બંને જગ્યાએ x માટે log લેતા। therefore taking log both side, log u equal to log x raised to sin x, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं log लेते हैं तो sin x मल्टीप्लिकेशन में sin x into log x. Now derivative with respect to x both side, હવે બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ derivative with respect to x log u 1 upon u into du by dx, into du by dx because derivative with respect to x equal to right hand side applying product rule, જમણી બાજુ ગુણાકારનો નિયમ ઉપયોગ કરીશું। first as it is derivative of second d by dx log x plus now second log x as it is into d by dx of sin x. du by dx u मल्टीप्लिकेशन में आ गया दिस साइड, u आ बाजू गुणाकार में sin x log x derivative log x 1 upon x sin x upon x plus log x into derivative of sin x is cos x, u
x raised to sin x, putting value of u. Your next step, u is x raised to sin x. सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट नंबर बोलेंगे, सेकंड नंबर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड. नाउ v equal to sin x raised to cos x. We want to find dv by dx, derivative of v with respect to x. આપણે અહીંયા હવે dv by dx શોધવા માંગીએ છીએ, x વિશે વિકલન કરવા માંગીએ છીએ. x વાળા પદ ઘાતના આધારમાં બંને જગ્યાએ ઘાતાંકીય એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ. therefore taking log both side, log v equal to पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई cos x into log of sin x, log sin x. Now डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા 1 upon v into dv by dx equal to राइट हैंड साइड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. डेरिवेटिव का गुणाकारना नियम थी जमणी बाजू फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इनटू d by dx ऑफ log sin x. डायरेक्ट मैं स्टेप लिखता हूं. कल मैंने 2 बार 3 बार बोला था कि बार बार यूज करने का है तो याद रख लेना d by dx ऑफ log sin x. क्या d by dx ऑफ log sin x याद है किसी को? कल मैंने बराबर याद रखने का कहा था, इंपॉर्टेंट बोला था कि बार बार यूज करना है. 1 upon sin x into cos x means cot x, cot x, derivative of log sin x. 1 upon sin x into derivative of sin x cos x plus log sin x as it is, second as it is, બીજું એમનું એમ જ. derivative of cos x is minus sin x, minus sin x. therefore dv upon dx equal to v into v means sin x raised to cos x. sin x raised to cos x into bracket cos x cot x, cos x into cot x minus sin x आगे लेते हैं, sin x आगे minus sin x into log of sin x, log of sin x, not sin x into sin x sin square x. log of sin x, f of x, function of x. Here function f is log function, logarithm function. log of sin x, not sin x into sin x sin square x. log of sin x here. Now third number from 1 to 3 પરિણામ 1 2 અને 3 પરથી from 1 2 and 3 dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. du by dx second number plus dv by dx third number. second number एज इट इज here लिखने का और थर्ड नंबर यहाँ से यहाँ लिखने का. फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप, आंसर मीन्स 9 example finished. 10. Example 10. Y equal to x raised to x cos x, x raised to x cos x plus x square plus 1 upon x square minus 1, x square plus 1 upon
x square minus 1. Two terms x plus में, therefore first q x raised to x cos x u equal to and v equal to x square plus 1 upon x square minus 1. Now y equal to u plus v dy by dx plus dy by dx. First number, first u x raised to x cos x. Second step, taking log both side, means log u equal to x into cos x. पावर मल्टीप्लिकेशन में घात गुणाकार में x into cos x into log x. x cos x multiplication में into log x. Now derivative with respect to x both side, 1 upon u du by dx, x into cos x into log x. 3 terms multiplication में, 3 terms multiplication में suppose u v w function of x, then d by dx of u v w, first second third 3 terms multiplication में x का फंक्शन है, आ u v w ત્રણે x ના વિધેય છે, તો first and second as it is, derivative of third w dash plus second third as it is, derivative of first u dash plus now first and third as it is, uw as it is, and derivative of second v dash. 3 terms x वाली, x into cos x into log x. Here 3 terms. Therefore, here 3 terms. The first and second left hand side derivative with respect to x is 1 upon u du by dx. First second as it is, derivative of log x, d by dx of log x, but d by dx of log x is 1 upon x, plus now first and third as it is, x into log x as it is, derivative of second, derivative of cos x means minus sin x. Plus now second and third as it is, means cos x into log x, second third as it is, derivative of first x 1. Now du by dx equal to 1 upon u, the u multiplication by u means x raised to cos x into bracket x cancel, cos x minus sin आगे, minus sin x, sin x into log x plus cos x log x. Here इस दोनों में से cos x कॉमन ले लेंगे, du by dx equal to x raised to cos x into bracket cos x first and third में कॉमन, पहला ने तीजा माथी cos x कॉमन, 1 plus log x minus second as it is x sin minus x sin x log x. Second number equation. Now v equal to here x square plus 1 upon x square minus 1. V equal to x square plus 1. V equal to x square plus 1 upon x square minus 1 means v function is not exponential form. v જે છે તે ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં નથી, માટે log લેવાનો નથી. Here v is not in exponential form, therefore not taking log both side.
exponential form, then taking log both sides. Here we not in exponential form, therefore not taking the log both sides. Direct derivative quotient rule. ભાગાકારના નિયમથી સીધું જ વિકલન આમાં લોગ લેવાનો વીમા નથી થતો, કારણ કે આ ઘાતાંકીય સ્વરૂપ નથી, ભાગાકાર સ્વરૂપ છે. માટે ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ with respect to its x means dv by dx. Quotient rule applying numerator and denominator. अंश અને છેદ. Denominator as it is. Denominator as it is. Into derivative of numerator. Derivative of numerator is x square plus 1. Derivative of x square plus 1. X square 2x. Derivative of x square is 2x. Plus derivative of 1 is 0. Means 2x plus 0 means 2x. Minus, now numerator as it is, અંશ એમનો એમ જ, into derivative of denominator, છેદનું વિકલન, 2x minus 0 means 2x, upon denominator square, upon છેદનો વર્ગ, x square minus 1 square. dv by dx equal to, in numerator 2x common, અંશમાં 2x સામાન્ય, x square minus 1 minus x square minus 1 upon x square minus 1 square. Therefore dv by dx equal to x square cancel, minus 4x, 2x into minus 2, minus 4x upon x square minus 1 square, third number. Now we want dy by dx. So dy by dx from 1, 2 and 3. dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. So from 2 and 3. du by dx and dv by dx. du by dx ये जो टर्म है सेकंड नंबर का इक्वेशन है, यहाँ लिखने का है. थर्ड नंबर हियर इट इज प्लस होगा, बट हियर माइनस है तो माइनस साइन कर देना. टेन फिनिश्ड. Example number 11. Y equal to x cos x raised to x. X into cos x raised to x plus x sin x raised to 1 upon x. X sin x raised to 1 upon x. Here u equal to first x cos x raised to x and v equal to x sin x raised to 1 upon x. Therefore y equal to u plus v dy by dx, dy by dx plus dy by dx, first number. Now u equal to x cos x raised to x. Taking log both side, पावर मल्टीप्लिकेशन में घात गुणाकार में x इंटू log ऑफ x, x इंटू x पावर मल्टीप्लिकेशन में, x पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई तो x इंटू log x इंटू cos x, log x इंटू cos x, log x इंटू y, then log x plus log y, log formula. Here x multiplication आ गया, therefore log x into cos x, तो log x into cos x, log x plus
log cos x log का रूल अप्लाई कर दिया डॉट नाउ टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड બંને બાજુ હવે x વિશે વિકલન લેતા ડાબી બાજુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ 1 upon u du by dx राइट हैंड साइड x इंटू log x फर्स्ट है तो x इंटू log x एक स्टेप ऐड कर देते हैं बाद में डेरिवेटिव करते हैं x log x प्लस x log cos x नाउ x प्रोडक्ट में ले लिया ब्रैकेट ओपन कर दिया x गुणाकार में ले लीधो कૌંસનું વિસ્તરણ કરી નાખેલું છે 1 upon u du by dx equal to now x derivative of x log x plus derivative of x log cos x taking derivative with respect to x both side left hand side 1 upon u du by dx right hand side x derivative x into log x by applying product rule ગુણાકારના નિયમથી x into log x first x second as it is first x as it is derivative of second log x 1 upon x plus now log x as it is derivative of x is 1 plus again product rule first and second x into log cos x log of cos x not log into cos x log of cos x f of x log of x cos x first x second log cos x means the product rule again x first as it is value m no m derivative of log cos x is minus 10x log cos x 1 upon cos x into minus sin x derivative of log cos x derivative of log x is 1 upon x but here x is cos x so 1 upon cos x into derivative of cos x derivative of cos x is minus sin x गई काल लास्ट लेक्चर 6 में भी मैंने बोला था डेरिवेटिव log cos x is minus 10x डेरिवेटिव of log cos x is minus 10x minus sin x upon cos x minus 10x log derivative log sin x is cot x derivative log of cos x is minus 10x first as it is derivative second finished plus now second as it is log of cos x as it is derivative of first derivative of x is 1 therefore du by dx equal to u means x cos x raised to x into here x cancel 1 plus log x minus x 10x plus log of cos x plus log of cos x means log cos x second number du by dx now v equal to x sin x raised to 1 upon x we want dv by dx now હવે આપણે dv by dx શોધવા છે there exponential form x base and power both side therefore taking log function both side અહીંયા એ હવે ઘાતાંકી વિધેય આધાર અને ઘાતમાં x વાળા પદ છે માટે બંને બાજુ log લેતા log v equal to 1 upon x पावर मल्टीप्लिकेशन में 1 upon x घात गुणाकार में log of x sin x log of x sin x means log x plus log sin x log of x sin x so log x plus log sin x now derivative with respect to x both side 1 upon v dv by dx डेरिवेटिव का एक स्टेप यहाँ भी ऐड करते थे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 1 upon x log x plus 1 upon x log sin x now
डेरिवेटिव, और ब्रैकेट ओपन कर दिया 1 अपॉन एक्स इंटू log x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू log sin x. नाउ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड. હવે બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા डेरिवेटिव log v 1 upon v into dv by dx with respect to x, તેથી ગુણાકારમાં dv by dx. फर्स्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. log x upon x है, क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं log x upon x, बट हियर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे 1 upon x into log x. અહીં ગુણાકારનો નિયમ લગાડીશું 1 upon x પહેલું અને log x બીજું, ભાગાકારના નિયમથી પણ થાય log x upon x, બટ हियर applying product rule ગુણાકારના નિયમથી. ફર્સ્ટ 1 upon x as it is. Derivative of log x is 1 upon x. Derivative of second plus now log x as it is. Derivative of 1 upon x is a derivative of 1 upon x. लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x का भी यूज बार बार करना पड़ेगा. कितना है, बार बार याद, कितनी बार याद करूं मैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 upon x means x raised to minus 1 means x raised to n rules. x raised to minus 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x raised to minus 1 मल्टीप्लिकेशन में x raised to n and x raised to n minus 1 minus 1 मल्टीप्लिकेशन में x raised to minus 2 means minus 1 upon x square. तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 upon x is minus 1 upon x square. Divide dx of 1 upon x is minus 1 upon x square. लेक्चर 6 में मैंने ये सब चार फॉर्मूला नहीं है, एग्जाम्पल है, पर एग्जाम्पल में बार बार यूज करना पड़ता है, तो मैंने बोला है कि आप इसको याद रख ही लो. तो यार डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं. First 1 upon x as it is, derivative of log x is 1 upon x, plus now second as it is and derivative of 1 upon x. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Plus here applying again product rule 1 upon x first, second log sin x. First 1 upon x as it is into log of sin x, derivative of log sin x into derivative of log sin x. Derivative of log sin x cot x डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x cot x. कल ही बोला है, आज भी अभी यही किया था हमने. प्लस नाउ log of sin x second as it is into derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Derivative finished. Now dv by dx equal to v into 1 upon v, here v into v means x sin x raised to 1 upon x into bracket x square 1 upon x square minus log x upon x square minus log x upon x square plus cot x upon x minus 1 upon x square log sin x bracket finished. Log sin x. Therefore dv by dx equal to x into sin x raised to 1 upon x into bracket x square LCM है. x square LCM लेते हैं 1 minus log x 1 minus log x. यहाँ x मल्टीप्लिकेशन में लेना पड़ेगा, x square LCM ले रहे हैं. અહીંયા આપણે x square લસા લઈએ છીએ એટલે અહીંયા x વડે ગુણાકાર પ્લસ x cot x plus x cot x and here minus log sin x minus log sin x bracket finished.
अपॉन एक्स स्क्वायर आउटसाइड, ब्रैकेट आउटसाइड, कौशनी बार। थर्ड नंबर dv by dx, तो फ्रॉम 1 2 and 3 dy by dx equal to du by dx plus dv by dx, du by dx इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 आंसर। कल भी मैंने बोला था कि क्वेश्चन की साइज और आंसर की साइज दोनों में डिफरेंस रहेगा, क्वेश्चन से आंसर ज्यादा बड़ा है। जो आप गुजराती मीडियम वाला તમે જો આ સ્વાધ્યાયના એક્ઝામ્પલ રેફરન્સ બુક જીબીએસ શાહમાંથી કરશો તો થોડી મેથડ અલગ છે। दर्पण कुमार इंग्लिश मीडियम वाला को कुमार है, कुमार में सॉल्यूशन कैसे मुझे मालूम नहीं है, चेक कर लेना। जो रेफरेंस बुक को बी एस शाह में सॉल्यूशन दिया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यू भी गुजराती मीडियम वाला बी एस शाह रेफरेंस बुक में जो मेथड डायरेक्ट विकलन करे છે અને આપણે બે ભાગમાં વિકલન કરીએ છીએ, યુ અને વી। યુ વાળા જુદા, વી વાળા જુદા। યુ વાળાનું ડીયુ બાય ડીએક્સ શોધીએ છીએ, વી વાળાનું ડીવી બાય ડીએક્સ શોધીએ છીએ અને પછી બંનેનો સરવાળો કરીએ છીએ। જ્યારે બીએસ શાહમાં ડાયરેક્ટ વિકલન આપેલું છે, સીધે સીધું વિકલન આપ્યું, એટલે ખબર ના પડે, કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જશે। ઓલા બે ભાગમાં વિકલન કરીએ તો આપણે ભૂલ ना पड़े। બે अलग एग्जाम्पल से मानी लेवानुं। इंग्लिश मीडियम वाला आप रेफरेंस बुक में देख लेना, कुमार दर्पण में, कि ये मैंने जो यहाँ यू प्लस वी की मेथड से सोल्व करा रहा हूँ वो मेथड है कि कोई अलग मेथड है। बी एस शाह में तो अलग मेथड है ही, डायरेक्ट मेथड है, बट जो डायरेक्ट मेथड कुमार में दर्पण में भी होती है इंग्लिश मीडियम वाला, तो ये जो मैंने यू एंड वी दो पार्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया है वो पद्धति अप्लाई करना, वो सॉल्यूशन में इजी रहेगा। दो एग्जाम्पल ऐसे मान के आगे बढ़ना, u प्लस वी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये इजी रहेगा। दो पार्ट में एग्जाम्पल करोगे तो, और जो बी एस में तो डायरेक्ट एक ही पार्ट में फिनिश करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कोर में ज़रा देख लेना कि कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करे तो यू वी की मेथड अप्लाई करो, भले थोड़ा ज़्यादा स्टेप होगा, बट आपको जो स्टेप में मिस्टेक होगी वो मिस्टेक नहीं होगी। ये पार्ट में करोगे तो यू एंड वी में। आगे नाउ फाइंड dy by dx ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15। હવે 12 થી 15 સ્વાધ્યાયના દાખલાઓમાં dy by dx આપેલા વિધેયના dy by dx શોધવાના છે 12 થી 15 માં। 12 થી 15 માં હવે dy by dx શોધવાના છે 12 x raised to y plus y raised to x equal to 1। एग्जांपल क्वेश्चन चेंज हो गए। 1 to 11 एग्जांपल में देखोगे तो इक्वेशन टाइप नहीं था, એટલે કે લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ नहीं था, LHS इक्वल टू RHS फॉर्म नहीं था। और ये यहाँ 12, 13, 14 एंड 15 देखो, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में दो साइड आ गई। और 1 to 11 में देखो ऐसा नहीं था, इसलिए हम एज्यूम करते थे आगे y इक्वल टू और डिवाइड बाय dx फाइंड करते थे। हियर बोथ साइड इक्वेशन टाइप क्वेश्चन हो गया, इसलिए हमें y एज्यूम करने का नहीं है कि टेकिंग y, सपोज y इक्वल टू 1 to 11 में हमने सब एग्जाम्पल में y इक्वल टू लिया था, यहाँ y इक्वल टू नहीं लेने का है। 9, 12, 13, 14, 15 में
both side, left hand and right hand side both side given. डायरेक्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ડીવાય બાય ડીએક્સ फाइंड करने का है. અહીંયા હવે 12, 13 અને 14, 15 ચાર દાખલાઓમાં સમીકરણ ટાઈપ છે, ડાબી બાજુ જમણી બાજુ, એટલે y બરાબર રકમ ધારવાની નથી. જે આગળના 1 થી 11 માં આપણે y બરાબર નહોતા આપેલા અને આપણે y બરાબર ધારીને ડીવાય બાય ડીએક્સ શોધતા હતા. હવે ડાયરેક્ટ ડીવાય બાય ડીએક્સ શોધવાનું છે, એટલે કે બંને બાજુ x વિશે વિકલન ડાયરેક્ટ કરવાનું છે. ડાયરેક્ટ વિકલન હવે તો ફર્સ્ટ x raised to y plus y raised to x equal to 1. Now y equal to लेने का नहीं है, जो हम स्टार्टिंग में y equal to लेते थे. Here u equal to x raised to y and v equal to y raised to x. Taking u equal to x raised to y and v equal to y raised to x. So first of all, now u plus v equal to 1. Now our question, UV form, u plus v equal to 1. Taking derivative with respect to x both side, બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા du by dx plus dv by dx equal to right hand side derivative of 1 constant. અચળનું લક્ષ 0, 1 અચળ છે. फर्स्ट नंबर here du by dx plus dv by dx फाइंड करके दोनों का सम इक्वल टू 0 लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे. नाउ u equal to x raised to y. Here y is also function of x, like as y equal to sin x, y equal to log x, y equal to x square, etc. અહીંયા y પણ x નું જ કોઈક વિધેય છે, પણ અનનોન છે, મીન્સ ઇમ્પ્લિસિટ ફંક્શન, મીન્સ ગુડ વિધેય ગુજરાતીમાં. તો y equal to x raised to y means exponential form. The exponential form here, therefore taking log both side, log u equal to y into log x. Log u equal to y into log x. Now derivative with respect to x both side, બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા 1 upon u into du by dx. Right hand side equal to right hand side y into log x. ગુણાકારના નિયમથી જમણી બાજુ applying product rule. First y, second log x. First as it is derivative of log x with respect to x 1 upon x, divide dx of log x 1 upon x. Plus now log x as it is derivative of y with respect to x is dy by dx. So therefore du by dx equal to u into upon 1 upon u means u into u is x raised to y into y upon x plus log x into dy by dx. So you dy by dx finished. Now v equal to y raised to x. Here y raised to x right hand side, exponential form. Y is also in terms of x, y is also function of x, unknown function. y raised to x exponential form, y raised to x ઘાતાંકી સ્વરૂપ છે, માટે બંને બાજુ log લેતા. Therefore taking log both side, log v equal to x into log y. Power x multiplication में x into log y. Now derivative with respect to x both side. Left hand side derivative of log v with respect to x, log v નું x વિશે વિકલન 1 upon v into dv by dx. Right hand side x into log y, product ગુણાકારનો નિયમ. First x as it is derivative of log y is 1 upon y into dy by dx. Derivative of log y with respect to x 1 upon y into dy by dx. Plus now second as it is log y into derivative of first x, derivative of x is 1. Derivative of x is 1. Now dv
upon dx equal to v, 1 upon the v means y raised to x into bracket x upon y dy by dx plus log y. Second number, third number, from 1, 2 and 3. પરિણામ 1 અને 2 પરથી from 1, 2 and 3 means value of du by dx plus du by dx are putting in 1 from 2 and 3. પરિણામ 2 અને 3 ની કિંમત du by dx અને du by dx ની કિંમત એક નંબરમાં મૂકતા du by dx છે એ du by dx is x raised to y into y upon x plus log x into dy by dx. Du by dx finished plus dv by dx equation number 3. Y raised to x into x upon y dy upon dx plus log y equal to 0. Here we want dy by dx. Find dy by dx. Our question. Example number 12, 13, 14, 15. Find dy by dx. Here dy by dx term collect in left hand side and common dy by dx in left hand side. અહીંયા આપણે ડાબી બાજુએ dy by dx વાળા પદ ભેગા કરીશું અને dy by dx કોમન રાખીશું. જમણી બાજુ dy by dx વગરના પદ. Now left hand side dy by dx term x raised to y into log x into dy by dx. dy by dx common. Here dy by dx term plus y raised to x into x upon y dy by dx common. Y raised to x into x upon y dy by dx. Right hand side without dy by dx terms minus sign रहेगी आगे x raised to y into y upon x plus y raised to x into log y minus का bracket finished minus નો કૌંસ પૂરો. Our question is dy by dx. Therefore dy by dx equal to minus x raised to y into y upon x plus y raised to x into log y upon dy by dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड अपन में डाबी बाजू डिवाइड एक गुणाकार से जमनी बाजू भागाकार में x raised to y into log x plus y raised to x into x upon y. Now dy by dx equal to minus here x raised to y minus 1. X raised to y upon x into y plus y raised to x into log y upon x raised to y into log x plus here y raised to x upon y means y raised to x minus 1 into x. आंसर 4 मार्क बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए एग्जाम्पल मोस्ट आईएमपी है 4 मार्क के लिए. इसके बाद जो 13 नंबर है वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है. मीन्स समझो 12, 13, 14, 15 मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क के लिए. नाउ 13
y raised to x equal to x raised to y. 13 y raised to x equal to x raised to y. Find dy by dx. Taking log both side direct. x multiplication by y exponential form. Base in power में x y terms. y is also function of x. यहाँ y અને x બંને ઘાતના આધારમાં છે માટે log લેતા y પણ x નું જ વિધેય. તો y into log x equal to x into log y equal to x पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई x into log y equal to y into log x. Now derivative with respect to x both side. First left hand side by applying product rule. હવે બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા ડાબી બાજુ ગુણાકારનો નિયમ. પહેલું x બીજું y. First log x second log y applying product rule. x first as it is. Derivative of log y means d by dx of log y. मैं ये स्टेप कट कर देता हूँ. आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में क्या एक नहीं एक रीत का रिपीट एग्जाम्पल हो रहा है इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ. डी बाई डी एक्स ऐसा लिखना पड़ता है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस log y सेकंड एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x. स्टेप के बाद का स्टेप मैं लिखता हूँ. आपको तो एग्जाम में ये स्टेप लिखना पड़ेगा याद रखना. मैं डायरेक्ट स्टेप थोड़ा कट करता हूँ क्योंकि ओरली बात हो जाती है. x first as it is derivative of log y means 1 upon y into dy by dx plus now log y as it is second term as it is derivative first is 1 derivative first means derivative of x with respect to x1 इस टर्म लिखना पड़ेगा. now right hand side same again right hand side also product rule first and second. First as it is derivative of log x is 1 upon x plus now log x second as it is derivative of y with respect to x means dy by dx. So now left hand side to collect dy by dx term and common dy by dx. ડાબી બાજુએ હવે આપણે dy by dx બરાબર ભેગા કરીએ છીએ અને કોમન કાઢીએ છીએ. x upon y minus log x. x upon y common dy by dx x upon y minus log x into dy upon dx. The right hand side without dy by dx term y upon x minus a log y minus log y. Therefore dy by dx equal to y upon x minus log y upon x upon y minus log x. dy upon dx equal to here in numerator taking LCM x અહીંયા અંશમાં x log લસા લઈએ છીએ y minus x log y. x LCM लिया है अंश न्यूमरेटर में याद रखेंगे अपॉन इन डिनोमिनेटर टेकिंग एलसीएम y छेदમાં આપણે y લસા લઈએ છીએ એટલે x minus y log x x minus y log x. नाउ बोथ साइड एलसीएम लिखने का बाकी है. न्यूमरेटर का एलसीएम था x डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का एलसीएम y था और न्यूमरेटर में. मीन्स અહીંયા આપણે અંશનો લસા x હતો એ છેદમાં અને છેદનો લસા y હતો તે અંશમાં આવી ગયો ગુણાકારમાં. y upon x आगे लिख लेना. y upon x आगे ले लेना. तो फाइनली आंसर cos x raised to y. Cos x raised to y equal to cos y raised to x. Cos y raised to x. अभी हमने 13 में जो ये देखा x raised to y equal to y raised to x टाइप का था. Here
cos x cos y raised to y x. एक्सपेंशन फॉर्म घातांकी स्वरूप માટે બંને બાજુ log લેતા. Here expansion form, therefore taking log both side, y multiplication में y into log of cos x. log of cos x होता है, कभी कभी log of cos x का ब्रैकेट में भी लिखते हैं log of cos x, कभी कभी डायरेक्ट ऐसा ही लिखते हैं. तो log of cos x से समझना f of x type, f is function, ये logarithm is also function, log function, लघुगणक विधेय. तो y into log of cos x equal to right hand side taking log both side x into log of cos y. Now derivative with respect to x both side. હવે બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા. ડાબી બાજુ કરાવ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પ્રોડક્ટ એપ્લાઇંગ ફર્સ્ટ second y first as it is, derivative of log cos x means dy dx of log cos x, dy dx of log cos x 10x. बार बार ये करना पड़ेगा, बोलता हूँ dy dx of cos log of dy dx of log cos x 1 upon cos x, log of x 1 upon x, here x is cos x, 1 upon cos x, but x is cos x, therefore into dy dx of cos x. Now second as it is, log of cos x it is, derivative of y with respect to x is dy by dx. So now right hand side, again applying product rule. First as it is, derivative of log cos y is 1 upon cos y, derivative of log of cos y 1 upon cos y into derivative of cos y is minus sin y into dy by dx. Y term derivative with respect to x, y વાળાનું x વિશે વિકલન થતું હોય ત્યારે ગુણાકારમાં dy by dx લખવાનું, કારણ કે x વિશે વિકલન કરીએ છીએ. તો log of cos y, derivative of log of cos y 1 upon cos y, derivative of cos y minus sin y into dy by dx. Now second as it is, log of cos y as it is into derivative of first means dy by dx of x. y, derivative of cos x is minus sin x, derivative of cos x is minus sin x, so log of cos x minus 10x, minus 10x, minus sin आगे, plus log of cos x into dy by dx. राइट हैंड साइड में minus x 10y, minus x 10y into dy by dx plus log of cos y, log of cos y, dy by dx of x 1 हो जाएगा, तो log of cos y. Now left hand side collect dy by dx terms and common dy by dx. Right hand side without dy by dx terms. હવે ડાબી બાજુએ આપણે dy by dx વાળા પદ ભેગા કરીએ અને dy by dx કોમન કાઢીએ, જમણી બાજુ dy by dx વગરના પદ. તો dy by dx ના ટર્મ log of cos x. Here dy by dx term minus minus plus x 10y into dy by dx. Right hand side log of cos y minus minus plus y 10x. Therefore dy by dx equal to a numerator, dy by dx साथ मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर हो जाएगा आंसर. Means dy by dx equal to log of cos y plus y 10x upon log of cos x plus x 10y. आंसर ये जो dy by dx साथ मल्टीप्लिकेशन हो वो अपन में कर देना राइट हैंड साइड. आंसर जब गुणाकाરમાં dy by dx સાથે છે આ બાજુ ભાગાકારમાં મૂકી દો એટલે આન્સર થઈ ગયો.
15 x into y equal to e raised to x minus y. x into y equal to e raised to x minus y. log के बिना भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, डायरेक्ट log won't set not taking log, विदाउट log डिवाइड बाई dx फाइंड कर सकते हैं, बट ये एक्सरसाइज log का ही है, लॉगरिथम फंक्शन पेज का ही एग्जाम्पल्स है 5.5 का एक्सरसाइज का, तो हम लॉगरिथम मेथड से ही सोल्व करेंगे. અહીંયા log લીધા વગર પણ ડાયરેક્ટ વિકલન થઈ જાય છે. ડિવાઇડ બાય x મળે, આ બાજુ ગુણાકારનો નિયમ, આ બાજુ e raised to x minus derivative x minus y into 1 minus dy by dx, right hand side derivative finished. e raised to x derivative of e raised to x is e raised to x. Here e raised to x minus y, so e raised to x minus y into derivative of 1 derivative of x minus y, derivative of x minus y, derivative of x is with respect to x1, derivative of y with respect to x is dy by dx. Here right and left hand side product will apply करेंगे, x into dy by dx plus y into 1. और left hand side derivative finished और right hand side derivative finished. dy by dx term left hand side as it is, derivative finished. Now simplification, left hand side dy by dx, right hand side dy by dx without term dy by dx. Answer. But हम log लेके करेंगे, और एग्जाम में कोई भी मेथड से आगे अप्लाई कर सकते हैं. log x plus log y, taking log both side, log of x y means log x plus log y. Here x minus y multiplication में आ गया into log e. log e here not given base, log of x means log of x to the base e. log of x to the base is means natural logarithm ln x. ln x log x में बेस नहीं है तो बेस e है ऐसा मानने का है, मीन्स हियर बेस e, तो log of e to the base e equal to 1 हो जाता है. log e base e equal to 1, तो हियर log e base e 1 हो जाएगा. नाउ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા 1 upon x, log x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 upon x, log y 1 upon y dy by dx, y term डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, therefore log y डेरिवेटिव 1 upon y dy by dx. right hand side derivative of x is 1 minus derivative of y is dy by dx, log e 1, log e to the base e 1, log e not given here base e, not given here base, तो e समझना base e है, log x to the base e. Now left hand side dy by dx terms 1 upon y minus 1 minus minus plus 1 into dy by dx, right hand side 1 minus 1 upon x, therefore dy by dx equal to 1 minus 1 upon x upon 1 upon y plus 1, therefore dy by dx equal to LCM numerator x, अंशમાં લસા x લઈએ છીએ, x minus 1 અને denominator and taking LCM denominator y, 1 plus y, न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का एलसीएम न्यूमरेटर में. અહીંયા x અંશનો લસા હતો એ છેદમાં અને છેદનો લસા y હતો તે અંશમાં, તો y upon x, y into x minus 1 upon x into 1 plus y dy by dx. Answer. मैं भूल जाता हूँ क्योंकि आप तो याद नहीं दिलाओगे क्योंकि मेरे सामने नहीं हो, वरना तो आप बोल देते कि साहब वो एग्जाम पेपर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का हमने लिख लिया है,
बट तुम तो बोल नहीं सकते। मैं आशा रखता हूँ कि आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का दोनों का 30-30 मार्क का क्वेश्चन पेपर लिख लिया होगा। आपके पास आंसर पेपर नोट में लिख के रखना। जब हम मिलेंगे तब होमवर्क और एग्जाम पेपर मांगेंगे। ओके, तो मैं आशा रखता हूँ कि चैप्टर 3 चैप्टर 4 फिनिश्ड हो गया होगा, कंप्लीट हो गया है, ऐसा मान के आपने 2 पेपर लिख लिया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, वरना तो मैं कड़क काम ले लेता कि भाई नहीं लिखा है लिखो, चलो नहीं लिखा है 2 बार लिखो 3 बार लिखो। ऐसा तो मैं पनिशमेंट आपको कर नहीं सकता। आप बहुत भाग्यशाली हो गई है कि विदाउट पनिशमेंट आप पढ़ रहे हो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, जो करते हो वो आपकी सब क्या करते हो मुझे मालूम नहीं कि क्लास जब आप वीडियो खोल के बैठे हो तब आप क्या करते हो, वीडियो में पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो मुझे मालूम नहीं है। मेरे सामने बैठे तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, और मैं आपको थोड़ा पनिशमेंट भी करता कि शायद आपका ध्यान पढ़ने में लग जाइए, बट आप तो मेरे सामने नहीं है, क्या करूँ मैं। आप सोचेंगे अच्छा है और सर की डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी, सर कोई पनिशमेंट तो नहीं करेगा, चलेगा अपने हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं रखना। मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा मन में रखो और प्रिपरेशन करते रहो। ओके, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का पेपर जो अभी है तक नहीं लिखा है जिसने, तो वो लिख लेना, ईमानदारी से लिखना, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है इस हिसाब से लिखना। ओके, थैंक यू। नाउ आगे जब एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x). નીચેના વિધેયનું વિકલન શોધવાનું છે અને પછી તેના પરથી f'1 શોધવાના છે, and hence find f'1. here given 16 number f(x) equal to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x raised to 4 into 1 plus x raised to 8. Find f dash x. Find the derivative of the function means find f dash x. And then find f dash 1. એટલે કે પછી f dash x શોધાઈ જાય, એમાં જ f dash x માં જ x બરાબર 1 મૂકવાના. First find f dash x and then putting in f dash x, x equal to 1. So taking log both side, log of f(x). Why taking log both side? Here terms 1, 2, 3, 4 terms. Therefore taking log both side. Log of f(x) equal to log of 1 plus x, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है लोगरिथम में, प्लस log of 1 plus x square plus log of 1 plus x raised to 4 plus log of 1 plus x raised to 8. Now डेरिवेटिव with respect to x both side. હવે બંને બાજુ x વિશે વિકલન કરતા. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ડેરિવેટિવ log of f(x) if log x then 1 upon x. Derivative of log x is 1 upon x. log x નું વિકલન 1 upon x, પણ અહીંયા log of f(x), therefore 1 upon f(x) into d by dx of f(x) means d by dx of f(x) means f dash x. If log x then 1 upon x, but here x is f(x), therefore multiplication में derivative of f(x) means d by dx of f(x) means f dash x. So now right hand side derivative, log x 1 upon x, but here x is 1 plus x. Therefore, log of 1 plus x derivative 1 upon 1 plus x into d by dx of 1 plus x into d by dx of 1 plus x. Similarly, 1 upon 1 plus x square, log of 1 plus x derivative into d by dx of 1 plus x square. Third term, similarly 1 upon
plus 1 upon 1 plus x raised to 4 into d by dx of 1 plus x raised to 4 plus 1 upon 1 plus x raised to 8 into d by dx of 1 plus x raised to 8. डेरिवेटिव का काम फिनिश हो गया. नाउ सिंप्लीफिकेशन f dash ax equal to 1 upon fx. मल्टीप्लिकेशन में मीन्स fx is 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x raised to 4 into 1 plus x raised to 8 into bracket of 1 upon 1 plus x. Derivative of 1 plus x is 1. Derivative of 1 0. Derivative of x is 1. So 1 0 plus 1 means 1. Similarly here d by dx of is 1. D by dx of x square is 2x. Therefore plus 2x upon 1 plus x square. Third term plus similarly 4x cube upon 1 plus x raised to 4. Last term plus derivative of 1 plus x raised to 8 is 1 0. X raised to 8 is 8x raised to 7 upon 1 plus x raised to 8. Now f dash x finished. Now next question, find and hence find f dash 1. તેના પરથી f dash 1 શોધો. તો putting in f dash x equal to 1. Here 1 plus 1 2, 1 plus 1 2. Here 1 plus 1 x equal to 1, 2, 1 2 3 4 times 2 into bracket 1 half plus putting x equal to 2 here, 1 equal here, so 2 upon 2. 2 into 1 upon 1 plus 1 plus putting x equal to 1 here, in numerator 4 and denominator 2 plus here last 8, last में 8 upon 2, last में 8 upon 2 bracket finished. Putting here x equal to 1, 8 upon 1 plus 1 means 1 plus 1 2. Now 2 into 2 into 2 16 into 1 half plus 1 plus 2 plus 4, 8 upon 2 16 into 4 plus 2 plus 1, 4 plus 2 plus 1, 1 upon 2 plus 7, 2 LCM, 16 upon 2 to LCM, 1 plus 14 means f dash 1 equal to 8, 16 upon 2 8 into 1 plus 14 15. 15 into 8 120 answer. अच्छा एग्जाम्पल है f dash 1 hence find f dash 1 અને તેના પરથી f dash 1 શોધો. 17 example differentiate in 3 ways maintained below. અહીંયા હવે જે આપેલું છે x ના વિધેય ગુણાકારમાં તેનું 3 રીતે વિકલન કરવાનું કહે છે. ફર્સ્ટ by using product rule, પહેલા ગુણાકારના નિયમથી, પછી બીજું by expanding the product to obtain a single polynomial, એટલે કે બહુપદી સ્વરૂપમાં ફેરવીને વિસ્તરણ કરીને, અને ત્રીજું by logarithm differentiation, ત્રીજું log લઈને. Here given question y equal to x square minus 5x plus 8 into
एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ફાઇન્ડ ડીવાય બાય ડીએક્સ થ્રી મેથડ ત્રણ રીતે ડીવાય બાય ડીએક્સ શોધવાનું કહે છે અને પછી છેલ્લે કીધું છે ડુ યુ ધે ઓલ ગીવ ધ સેમ આન્સર પછી આમ આપણે પર પ્રશ્ન કર્યો છે કે તમે કહી શકો છો કે આ બધામાં એક જ સરખું પરિણામ છે તો ગમે તે મેથડ એપ્લાય કરીએ परिणाम तो सरखो जो जवाब दो एनी वन मेथड यू यूज आंसर सेम होना चाहिए आंसर तो सेम ही रहेगा એટલે લાસ્ટ जो आंसर है डू यू देयर ऑल गिव द सेम आंसर तो कि यस सेम आंसर लास्ट का जो आंसर हमने पहले दे लिख लिया कारण के मेथड एनी मेथड अप्लाइंग टू सॉल्व एग्जांपल आंसर तो एक ही रहता है गमे ते मेथड दाखलो गणो जवाब तो एक न જ રહેશે तो फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल मींस direct dy by dx by using product rule first and second applying product rule first method applying product rule first as it is into dy by dx of second means 3x square plus 7 derivative of x cube is 7 3x square derivative of 7x is 7 derivative of 9 is 0 now second term as it is x cube plus 7x plus 9 into d by dx of first પહેલાનું વિકલન x square 2x minus 5x 5 80 d by dx फिनिश्ड हो गया नाउ सिंप्लीफिकेशन कर देना सिंप्लीफिकेशन में x रेज़ टू 4 टर्म्स आएगी x क्यूब वाली टर्म आएगी हियर x रेज़ टू 4 टर्म आएगी x रेज़ टू 4 टर्म फर्स्ट लिखना सेकंड में x क्यूब वाली टर्म इन पोलिनोमियल फॉर्म मींस बहुपदी स्वरूप में आंसर लखવાનો आंसर नाउ सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट ओपन सिंप्लीफाइड करो અને आंसर को लिखने का x रेज़ टू 4 हियर x रेज़ टू 4 टर्म सपोज हियर 3x रेज़ टू 4 हियर प्लस 2x रेज़ टू 4 देयरफॉर 5x रेज़ टू 4 ऐसा लिखने का बोलता हूं मैं फर्स्ट 5x रेज़ टू 4 सेकंड x क्यूब थर्ड x लास्ट में कांस्टेंट विदाउट x टर्म्स आंसर इन पोलिनोमियल फॉर्म अब फर्स्ट मेथड dy by dx फिनिश कोई एग्जांपल का इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड मेथड अप्लाई करने का बोलता है बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट पहला હવે કૌંસનું વિસ્તરણ કરી પછી વિકલન કરો બાય expanding the product to obtain a single polynomial and then find dy by dx પહેલા હવે આનું વિસ્તરણ કરી નાખો y equal to x raised to 5 plus 7x cube plus 9x square minus 5x raised to 4 minus 35x square minus 45x plus 8x cube plus 8x cube plus 56x first 8x cube plus 56 x cube ही है ना x cube ही है 7x plus 9x 56x plus 72 now first x raised to 5 term second x raised to 4 term પછી x next x cube terms પછી x square terms x terms and last में constant term polynomial form first x raised to 5 that divided by dx is 5x raised to 4 5x raised to 4 here 5x raised to 4 होगा 3x raised to 4 and 2x raised to 4 divided by dx तो फर्स्ट है 5x raised to 4 है ना यहाँ भी 5x raised to 4 now y equal to first x raised to 5 second term x raised to 4 terms પછી x cube પછી x square next x and last में constant then derivative ऐसे x raised to 5 5x raised to 4 suppose x raised to 4 terms minus 5x raised to 4 minus 5x raised to 4 and here 2x ये फर्स्ट का जो सिंप्लीफिकेशन किया है ना ऐसा सेकंड कॉन्स का सेकंड का
एक्सपांडिंग करना पड़ेगा और बाद में टर्म्स कलेक्ट करनी पड़ेगी। एक्स रेस टू 4 टर्म यहाँ से भी आएगी, 2x रेस टू 4, 2x रेस टू 4 होगा इसमें से, और हियर 5x minus 5x raised to 4 means minus 3x raised to 4 and then derivative minus 12x cube, minus 12x cube. कोई एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट नहीं है। और थर्ड मेथड टेकिंग log both side, थर्ड मेथड बाय लोगेरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकના વિકલનથી, તો ટેકિંગ log both side, log y equal to log of x square minus 5x plus 8 plus log of x cube plus 7x plus 9, taking log both side. Now derivative with respect to x, 1 upon y by dy by dx equal to 1 upon x square minus 5x plus 8 log x 1 upon x. Here x is x square minus 5x plus 8. The derivative of x square is 2x minus 5. Similarly, here derivative 1 upon log of 1 upon x square plus 7x plus 9 into derivative of x cube plus 7x plus 9, x cube 3x square plus 7. Finish derivative. dy by dx equal to y. Y means y, first bracket, second bracket into this, and simplification. This type of simplification, polynomial फॉर्म में simplification करना। तीनों का dy by dx सेम आंसर होगा। तो 17 फिनिश्ड, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ऐसा मान लेना। If u, v and w are functions of x, then show that d by dx of u into v into w equal to, हमने ये रूल अप्लाई कर लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एंड थर्ड एज इट इज, प्लस नाउ सेकंड का डेरिवेटिव है, सेकंड का डेरिवेटिव है फर्स्ट u as it is, second का डेरिवेटिव with respect to x and third as it is, plus now v u का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड as it is, जो हमने अप्लाई किया था ये रूल्स यहाँ एग्जाम्पल में आ गया। तो प्रूव दैट एग्जाम्पल, સો ધેટ સાબિત કરો કે u v અને w x ના વિધેયો હોય તો સાબિત કરો કે dy dx of u into v into w equal to du by dx into vw plus u into dv by dx w plus u into v into dw by dx, u into v into dw by dx, u into v into dw, u into v into लास्ट टाइम या फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dv by dx, v का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज, एंड लास्ट में फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज, लास्ट का डेरिवेटिव w का। तो LHS प्रूव दैट, साबित करो छे dy by dx ऑफ u v w, vw का ग्रुप रखते हैं। नाउ अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड, product rule of two functions, first as it is, derivative of second, plus vw as it is, second as it is, derivative of first, d by dx of du by dx, u into d by dx into vw, again derivative product rule applying here, second and third, first and second, the u into first as it is, second का डेरिवेटिव, vw, now again applying product rule to functions v into w, first and second, first as it is, second का डेरिवेटिव, plus now w as it is, dv by dx, plus vw into du by dx. So here u into v dw by dx, u into v dw by dx, plus
u into w dv by dx plus v into w into du by dx. Answer. Second method, y equal to taking u v w. Therefore, derivative with respect to x both side d by dx of u v w. Taking derivative with respect to x both side. Now y equal to u into v into w. Therefore, we want to find dy by dx. We want d by dx of u v w. So d by dx of u v w, we want to find dy by dx. So taking log both side, log y equal to log u plus log v plus log w. Taking log both side. Now derivative with respect to x 1 upon y. सेकंड मेथड से एग्जांपल सोल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट में मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था. दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था. બે વિધેયના ગુણાકારના વિકલનનો નિયમ લગાડ્યો હતો. બે વખત યુઝ કર્યો હતો. સેકન્ડ ટાઈમ યુઝ કર્યો હતો. सेकंड मेथड बाय लोगेरिथम. तो ये चैप्टर 5.5 लॉग का ही है, तो लॉग मेथड से सोल्व करते हैं. डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिनिश 1 upon y divided by dx. राइट हैंड साइड 1 upon u du by dx plus 1 upon v dv by dx plus log w 1 upon w dw by dx. Derivative finished. Therefore dy by dx equal to 1 upon y. Here y multiplication में, but y equal to uv into w into bracket 1 upon u du by dx plus 1 upon v dv by dx plus 1 upon w by dx. Now uv into w ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. कौशल विस्तरण, तो ये कैंसिल हो जाएगा. therefore dy by dx equal to u कैंसिल हो जाएगा v w du by dx plus v कैंसिल u w dv by dx plus w कैंसिल u into v w by dx. Hence proved. Hence proved by logarithm. ये फर्स्ट मेथड में टू टाइम्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था. ओके. 5.5 एक्सरसाइज फिनिश्ड. एग्जांपल 5 जो है ये 5.5 में वो थोड़ा लेंथ ज़्यादा है. मोटा एग्जांपल 6 थोड़ा सॉल्यूशन ज़्यादा है. केयरफुल रहना पड़ेगा. 5.5 एग्जाम एक्सरसाइज फिनिश हो गई. नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 8 में जब मिलेंगे हम, तो मैं आपके साथ आशा रखता हूँ, आपके पास से आशा तो रखता हूँ. हर बार मैं अपील करता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते होगे, प्रिपरेशन करते होगे, मेरे साथ चलते होगे. नहीं चलते हो तो ज़्यादा नुकसान होगा आपका, मेरा नहीं. मैं तो मेरा काम पूरा करता हूँ, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट. जैसा कुदरत ने ये समय हमने ऐसा हमारा भाग में आया है. हमारे भाग में मीन्स ओवरऑल वर्ल्ड में है. हमारे एक के परेशानी, हमारे यहाँ एक परेशानी नहीं, हमारे सब भाइयों, सब स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में सब आदमी सब परेशान हो रहे हैं. सब घर पे बंद है. जो घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम जो होता है वो करते हैं. आप भी वर्क फ्रॉम होम करते होंगे. इसी आशा के साथ मेरा लेक्चर 7 फिनिश करता हूँ. हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 में. ओके, थैंक यू.